Hello people, welcome back to the 10 Star. So हम लेके आ गए हैं टॉप 20 स्केरियस्ट घोस्ट वीडियोस का पार्ट 3। जिसकी हम टॉप 10 कर चुके हैं हम टॉप 10 कर चुके हैं। अब टॉप 10 में आगे बढ़ क्या बोल रहे हैं जो भी है। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। आपको मजा आ रहा है वीडियो में? टॉप 10 नहीं कर चुके हैं। तौबा चुप रहिए आप प्लीज, मूड ना खराब करिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप चैनल पे नए आप सब्सक्राइब नहीं करा है और अगर आपको मजा आ रहा है हमारे साथ तो भाई कर दो, कौन सा पैसे लग रहे हैं, एंड हिट दैट घंटा बटन ताकि हम जब भी वीडियो निकाले तो हमारे साथ खींच चले हो, हमारे साथ वीडियो एंजॉय करो। और 7:08 पे हंसाने का काम हमारा, हमने जिम्मा ले लिया। शुरू करते हैं। डराने का भी जिम्मा, हंसाने का भी। Hell or high water. Popular YouTuber TechRax has been testing the durability of technology for years, especially the Samsung Galaxy series and the Apple iPhone. On his channel, you can watch these phones get destroyed in pretty much every way imaginable. He drops them from extreme heights, he crushes them with cars, shocks them with tasers, pounds them with hammers, there's hot knives, gas torches, and even a lawnmower. You name it, and TechRax has probably thrown an iPhone at it. However, when testing the durability of his brand new iPhone 11 Pro, things take an unexpected turn. He travels 7 hours to an isolated spot in the Nevada desert. He plans to drop the iPhone 11 into a 50-foot deep hot spring named Diana's Punch Bowl. For unknown reasons, this hot spring is also known by the name the Devil's Cauldron. Guys, I apologize in advance if it's super windy. We're basically in the middle of this desert. I want to show you guys the rig of what exactly is going to go on first before I even show you the hole. Now I want to show you guys the actual hole. So as I'm walking close, just a couple steps here. Pretty crazy, guys. You can see there's steam coming straight out of this water. It's supposed to be about 140 to 180 degrees Fahrenheit, so you will burn yourself if you try like taking a dip in here, but it's super sick, literally in the middle of nowhere. Now, the first time TechRax drops his recording iPhone into the extremely hot water, the phone comes out fine and the footage shows nothing particularly strange. Nice. But the second time he drops his phone into the Devil's Cauldron, things get a little weird. When he reviews the footage later, he's shocked by what he finds. पास कम करो। What are you looking at? अरे Stop recording. TechRax says he has no idea what could have caused this strange underwater screaming, especially since his first recording didn't pick up any odd sounds at all. So, just what do you think this strange sound from the Devil's Cauldron could be? Let me know down in the comments. You can watch this full video as well as TechRax's examination of the footage over on his YouTube channel. TechRax. Followed home. ड्रोन भी चल रहा है। Over on the YouTube channel Ashes to Ashes, Dave and his brother Chris explore abandoned and sometimes supposedly haunted houses. In this investigation of a woman who says that she has been haunted by an evil entity that is पूछ रही नहीं, लाइट ऑन करके खुद देख लूं क्या? लैंडी। I'll show you that there's nobody in the hall. मुझे लगा ऐसे बैठा है कोई। टेबल फैन से बन के निकला और देखिए कौन सी। Did you see it? मैंने देखा। I'll show you that there's nobody in the तो hall. सामान रखा होगा ना यार वो तो। Some odd thing with pointy ears seems to be hiding around the edge of a door. And note that when Dave swings his camera back around, whatever it was is now gone. You can watch all of Ashes to Ashes Paranormal Investigations over on their YouTube channel. First ghost hunt, last ghost hunt. Reddit user Manda Burke and her husband were exploring the haunted Hillview Manor, an old mental asylum located in Newcastle, Pennsylvania. Mental asylum. They bought tickets as part of a ghost hunting You tour don't go group. there. Hospitals. Manda says they walked around, checked the EVP meters supplied by the tour company, but nothing much happened.
Then they began to hear an odd shuffling sound at अच्छा the end. मैं एक बात बताऊँ, मुझे ना अच्छा लगता है, मतलब मुझे भी ना ऐसी चीज़ें जैसे एक्सप्लोर करना, फैंटेसी, मतलब वो करते हैं फैंटेसी नहीं, मतलब एक क्यूरियोसिटी होती है कि यार वहाँ पे क्यूरियोसिटी इज ओके बट नॉट गेट किल्ड बाय जैसे हमने अपनी स्टोरी बताई थी वो, तो मैंने ही सोचा था कि वहाँ जाते हैं, मतलब एक फील लेते हैं वहाँ की। लेकिन पता है जब आपके साथ कुछ ऐसा होता है ना, तब भी आप एक लोकेशन ढूंढते हो, तो उसमें हॉस्पिटल बिग नो है और मेंटल असाइलम वगैरह बिग नो है, जहाँ पे ऑलरेडी कुछ ऐसी एनर्जीज हैं या यहाँ पे बहुत सारी डेथ वगैरह जहाँ पे हो जाती है, वहाँ तो आप ग्रेवयार्ड्स End of one of the halls, but they thought nothing of it at the time. इतना भी डेयरिंग नहीं। Then, suddenly, from the end of the hall, they heard running footsteps charging towards them. मुझे तो कभी कभी मेरा कॉलेज ऐसे लगता था। गिर गए। उसकी बहुत गंदी फटी है भाई टोपी। Amanda says that the whole event was one of the scariest things she's ever experienced. Now, I should note that I don't usually show videos without some visible or audible evidence of the supernatural. But looking at the reaction of this group and seeing just how hard and painful those falls look, I think this is pretty compelling evidence that something came down that hall. But, as always, you decide. You decide. Deconstruction. Deconstruction. This next clip is from a Chinese ghost hunter named Xiao Long, who broadcasts his investigations live on a Chinese streaming service. अच्छा बीच में भी न्यूज़ में भी आया था ना कि ऐसे कोई घोस्ट हंटर था and he was saying that you know the ghosts are after him and then he got killed after a few days. Last year की बात है। पता नहीं। Xiao Long and his friend are exploring an abandoned building that's said to be haunted by the ghost of a construction worker who lost his life while working on the building. As they begin their investigation, creepy things start to happen immediately. 都能上楼吗？अच्छा रात哪里了？我操！我操！我刚才看着好像鸡巴干活的。你滚他妈了个逼的！真的。哎，搁哪呀？让大家走过去了。 One of the explorers swears that he saw a worker dressed in construction clothes walk through the lobby downstairs, but his friend doesn't seem to believe him. He shrugs it off and they continue their investigation. 这屋里进不了，进不了，别进！哎！哎呦我操你妈的！啊！哎呦我操！ फालतू में चिल्ला डरा रहा है।操你妈！这帮这全鸡巴那啥，这好我摆梨子呢。我操你妈！ अरे वही मुझे 咋来了？ मुझे लगा कोई और है इसकी माँ की। 在。 जैसे डरा देंगे उसको। ये लोग कुछ है वहाँ पे। वो याद है वो सीन याद है वो गेम खेलते हो भाई, उस गेम में कौन सी गेम थी? गेम होम स्वीट होम। होम स्वीट होम। उसमें ना वहाँ पे वो अंदर ही बैठी होती थी वॉशरूम में, एक सीन है और दूसरा था पैसिफाई। ओ भाई भाई पैसिफाई पुरानी वीडियोस की वजह थी। हाँ 你咋的了？你咋的了里头点儿？啊！我操你妈！ Again, the same explorer claims to have seen someone, but again, his friend thinks he's just being hysterical. Now, before we go any further, I should point out that unlike the Saudi Arabian ghost hunters who pray to ward off evil spirits, the Chinese believe that cursing and acting angry will scare away evil ghosts and demons.
and you'll see what I mean. डांट दो उनको. 操你妈！ कोई नहीं था. अगर मैं ऐसे रोऊंगी ना और तब भी मुझे नहीं बिलीव करा, ट्रैप तो फेंक के वहां पे भाग जाऊंगी. 有人操你妈！有人！出来！有啊！真有人！哎呦我操我！你过来！过来！ बाहर आ गए ना, पता लग 操你 गया. 妈！出来！操你妈的！谁？我操！哎呦我操你！你过来！你们过去，我怎么不敢去？ क्यों जा रहे हैं भाई? 出来！操你妈谁呀？ पागल भाई तू रॉन्ग डायरेक्शन जा रहा 哎 है. 呦我！ और अगर ये अभी तक आगे तक चल रही है क्लिप, इसका मतलब आगे भी कुछ होने वाला. मैं तो ये सोच के फट रही है. ओह वो पैर क्या है ये? It's अच्छा वो है, कैप है. कैप है. 我操你妈！ He was wearing that cap. हेलमेट ना. हाँ, helmet. Sorry. 你出来！我操你妈的！门后边儿有。出来！ चूहा. And yet again, one of the explorers sees what looks like a man in a red hard hat peering from behind the door. This time, he even manages to capture it on camera. But yet again, his friend doesn't believe him. That is, until everything suddenly takes a terrifying turn. ऊपर से वो गिरे टाइल. 哎我去你妈！我操你妈！ ऐसे उल्टा लटक के आएगा. क्या कर रही है? 回来！ भाग 操 रहे 你 हैं 妈 भाई. 的！ गोडाउन बन चुका. गोडाउन. गोडाउन बन गया. गोडाउन. अबे चले जाओ भाई, चौथी फेल. हमें तो गिर गया. अच्छा नहीं. वो गिर गया. अभी देख के बाद Oh fuck you. ये टेरिफाइंग होगा. 告你别他妈跑！ भाई तुम. As they make their escape, the building seems to be crashing down all around them. One of them falls right through an open hole in the floor. Luckily, they eventually manage to make it outside the building to safety. Fuck. So, what do you think? Did they catch extreme footage of an angry construction worker ghost on their live stream? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. You decide. Frozen with fear. Years ago, यार, Tyler पारस Rowe चोरी worked कितनी in a लंबी लग Kroger रही है. grocery store in Powell, Tennessee. He claims that every morning at exactly 9:02 a.m., the staff witnessed this at the warehouse freezer door. Freezers better not rest. सुबह सुबह भी हरकत होती है. Is there a light? Is there a light in here? And there's nothing in here. There's nothing, nobody, anything. It's just open. तो बाहर निकल गया ना वो तो. Tyler says that it was every morning like clockwork,
At 9:02 a.m., there was banging on the warehouse freezer, and then the door would swing open on its own. रात को सो रहा था वो. There was no one inside. आ गया ना अभी रात को सोने. So 2 months ago, someone named Emily claimed in the video's comments that she currently worked at the But that same happened Kroger every grocery morning. store, and that the strange occurrence still happened, even though the store had recently replaced the freezer door. She says that the freezer door still slams open and closed, all on its own. Same time, 9 to Meanwhile, AM. on TikTok. Okay. ये थी टॉप. अच्छा मैं एक चीज सोच रहा था पायल, व्हाट इफ कि हम ये वाली सीरीज की वीडियोस रात को निकालें. नहीं. अच्छा अरे हम थोड़ा शूट करेंगे रात को. नहीं मैं रात को नहीं देखूंगी वीडियो. मतलब रात को टू गिव दी रियल चिल्स टू द पीपल. अगर हम रात को निकालें, मतलब जैसे 9 बजे 10 बजे रात को निकाल रहे हैं. 12 बजे. अरे 12 बजे मीम टाइम. नहीं जैसे मतलब वी कैन ना कि 10 बजे हम सोच सकते हैं. ऐसा करते हैं 10:10 पे बोलेंगे यू नो व्हाट टाइम इज इट. कर सकते हैं वैसे कि 7 बजे अगर हम जैसे हॉरर मीम टाइम निकाल रहे हैं तो हम रात को मतलब वी कैन. हाँ व्हाट डू यू गाइस थिंक? तुम भी दोपहर को देखते हो. बाकी मजेदार चल रही है वीडियो. अगर आपको ये अब लास्ट पार्ट बचा इसका टॉप 5 की तो वो देखेंगे. बाकी अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो इस सीरीज के साथ तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram, Facebook, Twitter, all the links are in the description below. And one last thing guys, do remember one thing, you have to grind to shine. Take care, bye bye.